हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन कुमकुम भाग्य। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर लेकर के आई हूँ। मेरी जो वीडियो थी हिंदू गर्ल लिसन कुरान फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोगों के थ्रू काफ़ी पसंद की गई है। उस वीडियो पर मुझे मोस्टली बहुत सारे कमेंट आए हैं एक पर्टिकुलर वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरे व्यूअर्स ने एक पर्टिकुलर वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए कहा, तो उस वीडियो का नेम है द थ्रोन ऑफ अल्लाह। तो वैसे भी मैंने काफ़ी दिनों से रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई है, तो इसलिए मैं आज इस वीडियो पर रिएक्शन लेकर के आई हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को टाइटल से पता चलता ही होगा कि द थ्रोन ऑफ अल्लाह का मतलब होता है लाइक गॉड का तख्त। थ्रोन का मतलब होता है तख्त, यानी कि हिंदी में जिसे सिंहासन कहते हैं। तो गॉड का सिंहासन और तख्त। तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसी बनी है। आई होप वीडियो अच्छी बनी होगी, आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा वीडियो देख करके। बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एज वेल एज बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स वॉच द वीडियो। तो जैसे कि टाइटल से पता चलता है कि गॉड कौन है, इसके बारे में All the बताया praise जा is for Allah, who is the author of all existence and the most generous to his creation, while he is also the all-compelling. वो गॉड ऑथर हैं इस He पूरे is the only one वर्ल्ड worthy के। of our worship, having no partners, no associates, उनका कोई भी no पार्टनर sons, नहीं no है, daughters, कोई भी डॉटर या no सन one नहीं है, whom he must consult, and no one or anything which has any comparison और जैसा कि with मैंने अपनी him. पिछली वीडियो में बताया था कि All the उनके praise is कंपैरिजन for का भी कोई नहीं है, Allah, वो किसी से कंपैरिजन who नहीं is the करना चाहिए। king of all who claim sovereignty, the only one who has the right to legislate for his creatures. He is the giver of life. He is the causer of death, while death has no effect upon him, because he is the ever-living, the self-subsisting, the eternal and the only absolute. All the praise is डेफिनेटली for वो Allah, अनंत है, इटर्नल है, who has power over all things, and there is in reality no power and no strength, no influence to cause benefit or detriment except डेफिनेटली through him. It is he who created this complex world, the seen and the unseen, the evident and the speculative, the earth and all that is on it, and everything that is in it. उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को बनाया है। It is he who sent his messengers and prophets, alayhimus salam, with the common message of strict monotheism, which simply means that there's absolutely no one worthy of worship, no one worthy of our obedience except the Almighty, the One, the Absolute, and who has no partners. The earlier messages, which changed the world in the area in which the prophets were sent, those messages we know have changed, and even the prophets who brought them, their names are now lost. We just know in general because Allah told us in the Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. I've sent to every nation a messenger, उन्होंने calling एवरी नेशन के लिए people मैसेंजर to worship Allah alone and to avoid the worship of false gods. This essential message has been preserved in Islam in a way that it was never preserved before. Not because the message was different, because it was the same message,
but because of the fact that there would be no other prophets who would come after Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So therefore that message now had to be protected. और उनके जो It had to be आखिरी preserved prophet in a थे, way Muhammad peace be upon him, none of उन्होंने the जो earlier अपने messages दिए हैं were वो अभी preserved. तक प्रिजर्व करके रखे गए हैं कुरान में. I will tell you this, what you say you have come to know 40 years back, and what you call the Big Bang is already mentioned in the book which I read, the glorious Quran. It's mentioned 1400 years ago in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, which says, Avalam yaral lazina kafaru. Do not the unbelievers see, anna samawati wal arda, kanat ratkan fataqnahuma, that the heaven and the earth were joined together and we clove them asunder. What you're talking about, the Big Bang, I try and imagine compressing a spring. I push it 40 years पहले साइंटिस्ट closer and closer and closer together, so it's smaller and smaller and smaller. And I've stored a tremendous amount of energy in that spring. And when I let it go, it bursts out, it bursts out, it bursts out. the creation of the universe, which you came to know 40 years back, is already mentioned in this book, the glorious Quran, 1400 years ago. Who could have mentioned that in the Quran? So the atheists will say, maybe someone wrote, maybe it's a fluke, maybe it's a guesswork. A human being, regardless of who they are, or where they are, or what they do, will have this curiosity. They'll want to know, why am I here? How did I get here? And do I have a purpose? And if so, what is it? The only one who would really be able to answer that question would be the Creator himself. If there is a Creator, it would be up to him to tell us why we were created and what he expects from us and what this life is really about. Allah has shown the people from the time of Adam until right now, has shown the people what he wants from them. And it's a very simple thing, and that is that worship be for him alone without any partners. In fact, we know this life to be a test from Almighty God. That's why we're born, and that's why we die, because there has to be a beginning and an end for us to be tested on. The next life, after this life, no one will ever die again. A bad person or a good person. Both are brought back, and they continue to live in the next life, either in good shape or not so good shape, depending on how they did on the test. The worship of the God of Abraham, that was what was taught by these prophets. The Lord of the Arsh and Kursi. We're talking about the Lord of the worlds. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We're talking about the Lord of the entire universe and beyond. The entire universe and beyond. You know, we live in this dunya, and we are fascinated with this dunya which Allah subhanahu wa ta'ala indeed has created in a beautiful manner. We're fascinated. There are over billions of people which live on this dunya at this moment in time. Over 6 billion people that live on the dunya at this moment in time. This dunya of Allah subhanahu wa ta'ala is so big that there is space in this dunya for billions and billions and billions or more people. But what is this dunya in comparison to what Allah subhanahu wa ta'ala has created out there? This dunya is insignificant. This dunya is meaningless to Allah. It means nothing. It is worthless. So worthless, compare it with the sun. The sun is one star. You know more science than me. You'll be able to tell me better. Take this planet Earth and you place it inside the sun, and you will be able to place 1.3 million Earths in the sun. 1.3 million Earths in the sun. Allahu Akbar. Allah is the greatest. The sun is one star. One star. There are stars out there which are millions of times bigger than the sun. You tell me this, that you need millions and millions of stars to make one galaxy. And then you tell me this, that there are zillions of galaxies out there. Let me tell you on top of this, my friend, after this, whatever you see above, when you raise your head and you look above, whatever you see above,
the zillions and zillions and zillions of galaxies, let me tell you, this is everything there is within the first heaven. Everything there is within the first heaven, and Allah is the creator of 7 heavens. 7 heavens. And the distance between the first heaven and the second heaven is 500 years. You know, the distance that can be covered in 500 years, at what speed? Only Allah knows. Only Allah knows. But it will take 500 years to get from the first heaven to the second heaven. 500 years from the second to the third, third to the fourth, fourth to the fifth, fifth to the sixth, sixth to the seventh. Every time it will take 500 years. After the 7 heavens, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. You all read the Ayatul Kursi. You all know the Ayatul Kursi. After this, you have the Kursi of Allah. You have the chair of Allah subhanahu wa ta'ala. You know these 7 heavens that we've just talked about, in comparison to the Kursi of Allah, they're non-existent. They're meaningless. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given an example in a hadith, just to give us a little bit of understanding with regards to the 7 heavens in comparison to the Kursi of Allah. Take a ring from your finger, take it off, the small ring that you have, and place it, let's say, in a desert, the Sahara Desert. It's the biggest desert in the world. You know that ring that we take off from our fingers and place it in the Sahara Desert? What comparison is in between the ring and the Sahara Desert? Nothing. Nothing. The 7 heavens is the ring, and the Kursi of Allah is the Sahara Desert. After the Kursi of Allah, you have the Arsh of Allah. وَكَانَ أَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. You have the Arsh of Allah. Again, Rasulullah has given, has explained, so just so that we can understand. Take the ring, place it in the desert. This time, the ring is the Kursi and the Arsh is the desert. What is the Kursi in comparison to the Arsh of Allah? Nothing. Then you have angels which carry the Arsh of Allah. Their heads are in the 7th heaven and their feet are in the lowest earth. My friends, then you have the Lord of the Arsh al-Kursi. لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. He is beyond the size of Allah, who Allah is, what Allah is. The greatness of Allah is beyond the comprehension of my little mind. This is the being that you and I are messing with. Definitely सारी चीजें हमारी सोच के बाहर ही हैं. तो ये वीडियो तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी. इस वीडियो को देखते टाइम मैं तो बिल्कुल ही स्पीचलेस हो गई. तो इस वीडियो को देखकर मुझे 4 बातें, 4 मेन टॉपिक पता चले हैं. जैसा कि जो फर्स्ट जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि गॉड एक हैं, उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है. और सेम यही चीज़ होली कुरान की सूरह इखलास में लिखा गया है. उनका वो एटर्नल है, इन्फिनिटी है, अनंत है. उनका कोई भी रूप नहीं है. और जो कि सेकंड स्पीकर जो थे उन्होंने जैसा बताया कि उन्होंने एवरी नेशन के लिए अलग अलग मैसेंजर भेजे. और मैंने सुना है कि टोटल 1,24,000 मैसेंजर आए थे जिन्होंने लोगों को गाइड किया कि वो गॉड की इबादत करें, सिर्फ गॉड की ही पूजा करें. उनमें से कुछ मैसेंजर का नाम होली कुरान में अवेलेबल है, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और जो लास्ट थे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो लास्ट मैसेंजर आए थे. इन लोगों ने हम लोगों को, इन लोगों की जो मतलब मैसेज थे
वो अभी तक होली कुरान में प्रिजर्व करके रखे गए हैं, इसीलिए शायद इस बुक को ऑथेंटिक कहा जाता है। और जैसा कि थर्ड स्पीकर जो थे उन्होंने बताया कि कुरान में ये चीज़ें 1400 ईयर्स पहले ही लिखी जा चुकी हैं, जो कि साइंटिस्ट को 40 ईयर्स पहले पता चली। जैसे कि साइंटिस्ट जो बताया बिग बैंग थ्योरी के बारे में, गैलेक्सी कैसे बनी, वर्ल्ड के क्रिएशन के बारे में, ये चीज़ें साइंटिस्ट ने 40 ईयर्स पहले बताई, बट कुरान में ये चीज़ें 1400 ईयर्स पहले ही लिखी जा चुकी थी। और जो फोर्थ स्पीकर थे उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हेवन के बारे में, डेजर्ट और एक रिंग का। टोटल 7 हेवन्स हैं, जिनमें से एक हेवन से लेकर दूसरी हेवन के जो डिस्टेंस है वो 500 ईयर्स है। और ऐसे ही 500 ईयर्स एक हेवन से लेकर सेकंड हेवन, देन थर्ड हेवन, पूरा 7 हेवन्स पार करने के बाद देन गॉड का जो सिंहासन है वो आता है। उस सिंहासन को फरिश्तों ने उठा रखा है, जिनका सर हेवन में है और जिनके पैर लोवेस्ट अर्थ में हैं। तो वहाँ पे गॉड का तख्त है। तो मुझे ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, एज वेल एज शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।